Good. अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? टीथ. टीथ आर डेंटिस्ट. Dentists are the accessory digestive organ located in socket of the alveolar process of the mandible and mandible. The alveolar process are covered by gingivials, which extend slightly into the each socket. The socket is lined by predominant ligament or membrane, which consists of this fibrous connective tissue that anchors the teeth socket. A typically teeth has three major external regions: the crown, root and neck. The crown is the visible portion above the level of the gums. Embedded into sockets are the 1, 2 or roots. The neck consists of the junction of the crown and roots near the genlines. Internally, dentine form the majority of the tooth. क्या बनाते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द डेंटाइन बनाते हैं. डेंटाइन कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू गिव्स द टूथ इज द बेसिक शेप एंड रिजिडिटी. इट इज द harder than the bone because its higher content of the calcium salt. The dentine crown is covered by the enamel, which is consist of primary calcium phosphate and calcium carbonate. Enamel is also harder than bone, higher content of calcium, 95% है. In fact, enamel is the hardest substance in the body. It serves to protect teeth from the wear, tear, and chewing. It also protects against the acid of that can be dissolved dentine. The dentine root is covered by the cementum. Another bone-like substance which attaches to the root are called periodontal ligament. The dentine tooth is enclosed a space and large pulp cavity, which crown filled with the pulp. A connective tissue containing blood vessel, nerve, and lymphatic vessel, narrow extending pulp cavity, root canal, run through the root and tooth. Each root canal has opening apical foramen, which blood vessel and lymphatic vessel nerve extend. These blood vessels during nourishment and lymphatic vessels often protect and necessarily provide sensation. The branch of dentistry that connects preventive and diagnosis treatment disease often pulp and root, predominant like a alveolar one, endodontics. ठीक है, ये था हमारा रूट. इसके बारे में देखो, एनेमल है किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का. ये हमारे पास डेंटाइन, इसके नीचे ये क्या है? जिंगल सर्कस गैंग्लिस है. ये क्या? पल्प कैविटी है. पल्प कैविटी के अंदर क्या है? हमारे पास ब्लड वेसल्स है और क्या है? और जो पल्प कैविटी और ब्लड वेसल के बीच का जो स्पेस है, इसको कहा जाता है, जो साइड का स्पेस है, इसको सीमेंटम कहा जाता है. ये क्या है? एल्वेओलर बॉन्ड. ये प्रीडोमिनेंट लिगामेंट है. प्रीडेंटल लिगामेंट, एपिकल डोमेन, नर्व एंड ब्लड सप्लाई. Core treatment. Women have dentination. Set of teeth decide permanent. First teeth are deciduous teeth, also the primary teeth or milk teeth or baby teeth. Begin to erupt about 6 months age and approximately 2 teeth appear mount. Therefore, the incisor which closes the midline shifts adapt for the cutting into the food. Central and lateral incisor based on their position. Next to the incisor moving posteriorly and cupsid canines, which have predominant space called cups. Cupsid are used for shear food. Incisor cupsid only the roots. Posterior cupsid has first molar, second molar, which have the 4 cups. Maxillary upper molar, root, submandibular, pulp cavity. All deciduous teeth are lost generally between age 6 to 12.
and replaced by the permanent teeth. Deciduous molar are replaced by first and second premolar, which at root appear the guiding. Permanent molar corrupt the month premolar. First molar आएगा at the age 6 and second molar आएगा age of the 12 year. And wisdom teeth का आएगा जब आप 17 एज के हो जाओगे. Often manjar does not enclose posterior second condemnation infant third molar. ये था हमारा किसके बारे में, टीथ के बारे में. Mechanism of chemical digestion. Chemical digestion in mouth. Mechanical digestion in the mouth results to beginning of mastication. सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, mastication, in which the food is manipulated by tongue, ground by teeth and mixed by saliva. As a result, the food is reduced, soft and flexible and easily swallowed. Swallow is Lord Mosca's bolus. Food molecules begin to dissolve in the water and saliva is important activity because enzyme can react with the food molecules in the liquid medium only. The two enzymes, salivary amylase and lingual lipase, contain their chemical digestion in mouth. Salivary amylase, which is the secret salivary glands, initiates breakdown of the starch, dietary carbohydrate, either the monosaccharide or disaccharide complex. Polysaccharides such as starch, most of carbohydrate will eaten starch, but only monosaccharides can be absorbed into bloodstream, thus ingested disaccharide and starches must be broken down into monosaccharides. उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मोनोसैक्राइड में. The function of the slurry begin to the starch digestion, breaking down the starch into smaller molecules. फिर इसके बाद आते हैं डाइसैक्राइड. सच है डाइसैक्राइड कौन सा है, माल्टोज आएगा, ट्राइसैक्राइड आएगा, माल्टोट्राइज आएगा, शॉर्ट चेन ग्लूकोज पॉलीमर called alpha dextrin. Even though the food usually swollen too quickly, all starches to be broken down in mouth. फिर आएगा हमारा salivary amylase in the swelling food content on the stretch of out anchor hours with stomach stomach के अंदर क्या हो जाएगा, इस जाके inactive हो जाएगा. Saliva content lingual lipase which secreted by the lingual gland in the tongue. This enzyme become activated in the acidic environment of the stomach and thus start work after the food is swollen and break down dietary triglyceride fatty acid into diglyceride. Diglyceride contains glycerol molecules that to fatty acids. ये था हमारा क्या, digestion in mouth. ये summary है digestion. Chip and lips keep food between the teeth. Food uniformly chewed and during mastication. Salivary gland क्या करेगा, saliva secrete करेगा. Moisture जो फेरिंग्स को क्या रखेगा, मॉइस्चर एंड लुब्रिकेंट. स्लाइवा सॉफ्टन मोस्टन डिजोल्व फूड एंड क्लीनेस माउथ एंड टीथ. स्लाइवरी एमाइलेज स्प्लिट स्टार्च. फिर टंग है, एक्सटेंसिंग टंग मसल्स मूव द टंग साइड टू साइड एंड इनटू आउट. फूड मेजरमेंट mastication shaped in bolus and swallowing. Instructing tongue muscle alter the shape of the tongue, swelling and speech. Taste bud. Taste serve as the receptor for gustation and presence of the food in mouth. Secrete कराएंगे किसको, saliva by nerve impulse from the taste bud saliva. Lingual gland secrete करेंगे lingual lipase जो ट्राइग्लिसरॉल को किसमें करेगा, मोनोडाइग्लिसरॉल के अंदर. टीथ हेड कट टीयर एंड प्लूरल फूड. ये था हमारा क्या. अब इसके बाद आते हैं pharynx. When the food is first swallowed, it passes from mouth into the pharynx. Pharynx कैसा, funnel shaped tube that extend from internal ears to the esophagus posteriorly and to the larynx. The pharynx is composed of the skeletal muscle lined by the mucosal membrane and divided into three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. The nasopharynx functional होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए. oropharynx किसके लिए है, फूड के लिए. laryngopharynx किसके लिए है, laryngosophageal digestion as well respiratory function. Swallow food pass from mouth to oropharynx to and laryngopharynx. The muscle construction of these area help propel food into esophagus and then into the stomach. फिर इसके बाद आता है esophagus. The esophagus is a collapsible muscular tube
long lie posterior to the trachea. The esophagus begins at the inferior end of the laryngopharynx and pass to the mediastinum anterior to the vertebral column. Then proceeds in the diaphragm through a opening esophageal hiatus. The end of the superior portion of the stomach, sometime part of the stomach produce above diagram. The esophagus contains hilum, hiatus, hyria. Histology of esophagus. Mucus of esophagus contains non-keratinized certified squamous epithelium, lamina propria, and the muscular mucosa. Next, stomach mucus of the esophagus contains mucus gland, certified squamous epithelium associated with lips, mouth, tongue, and oropharynx and laryngopharynx. Affords considerable protection against the abrasion as well tear from the food particles. Chewing and mixed secret swallow. Submucosal contain alveolar connective tissue, blood vessel, and mucus musculus. Super third of the esophageal skeletal muscle and intermediate third skeletal muscle. The inferior third smooth muscle. At the end of esophageal musculus beams wide and prominent, and two sphincter, upper esophageal sphincter and lower esophageal sphincter. Which consist of the smooth muscle. Upper esophageal sphincter is regulate the movement food from pharynx into the esophagus, and the lower esophageal sphincter regulate the movement of food from esophagus to stomach. The superficial layer of the esophagus called adventia rather than the serosa stomach inside, because alveolar connective tissue in this layer not covered by mesothelium and connective tissue, and the connection tissue surrounding the mediastinum through the which press adventia attached to the esophagus and the surrounding tissues. ये था क्या हमारा इसोफेगस के अंदर कितने स्पिंटर है? 2 स्पिंटर है. हाफ स्केलेटन होगा, हाफ नॉन स्केलेटनाइज होगा. फिर आता है डिग्लूटिनेशन. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिग्लूटिनेशन. द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टोमक achieves the swallowing and deglutination. Deglutination is facilitated by the secretion of saliva and mucus involved in the mouth, pharynx, and esophagus. Swallowing occurs in 3 stages. The voluntary stage, in which bolus pass from oropharynx. Pharyngeal stage, involuntary of the bolus through the esophagus into the esophagus. The esophageal stage, involuntary passage bolus through the esophagus into stomach. कैसा आ गया? Involuntary है. Swallowing start when bolus forced back to the oral cavity into the oropharynx by the movement of the tongue upward and backward against plate and this action. ये देखो, ये क्या esophagus रिलैक्स हो गया. सर्कुलर मसल को क्या होना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट होने का पड़ेगा, तब फूड क्या आएगा? नीचे. अगर ये रिलैक्स होगी तो क्लोज हो जाएगी. Contain a voluntary stage of swelling with the passage of bolus oropharyngeus and involuntary किसके अंदर होगा? Pharyngeal stage swelling begin and the bolus stimulate the receptor of oropharynx which impulse to the deglutination center of the medulla oblongata and lower pons of the brainstem. The retaining impulse causes soft plate and the ulva move upward close of naropharynx, which prevents swollen food and liquids entering the nasal cavity. In addition, the epiglottis close of the opening to the larynx, which prevent the bolus from entering rest of the respiratory tract. The bolus move करेगा oropharynx to laryngopharynx. The upper esophageal sphincter relax and bolus into the esophagus move esophagus. कहाँ करेगा? esophagus में. The esophageal stage swelling begin once the bolus enter the esophagus. During this phase peristalsis movement start हो जाएंगे and the progression of the coordinates
concentration and relaxation of circular and longitudinal muscular push bolus onward. फिर क्या है हमारे पास, इन द सेक्शन ऑफ द इसोफेगस जस्ट सुपीरियर टू bolus the circular muscle contract and constricting the esophageal while squeeze bolus towards the stomach and the main, while longitudinal fibers inferior bolus also contract which shorten and inferior secrete pushes outward so it receives the bolus. The concentration contraction and rapidly repeated in wave push that food toward the stomach. As the bolus approach the end of esophagus and lower esophagus sphincter relax and the bolus move into the stomach, mucus secrete of the esophagus gland is lubricant bolus and reduce the friction. The passage of solid semi-solid food into the mouth to the कहाँ जाएगा stomach take place 4 to 8 सेकेंड. Very soft food lipids pass through. ये क्या था, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसोफेगस के अंदर दो स्पिंटर बन रहा है. ये क्या है, एक तो इसोफेगल होगा, एक अपर होगा, एक लोअर होगा. अगर ये रिलैक्स होगा तो फूड नीचे आएगा, ठीक है, और ये इसको बाद ये क्लोज, ये कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. स्पिंटर, ठीक है. ये था समरी. फेरिंग्स है, फेरिंग्स स्टेज करने के अंदर डी फेरिंजेस डिग्लूटिनेशन मुंह बोलस ओरिंगोफेरिंक्स, ओरिंगोफेरिंक्स से कहा गया लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स एसोफेगस क्लोज एयर पासेज. इसके अंदर क्या रहेगी, क्लोज रहेगी हमारी एयर पासेज को. इसोफेगस रिलैक्स द अपर इसोफेगस मूवमेंट परमिट द एंट्री बोलस इनटू फेरिंग इनटू द इसोफेगस. इसोफेगल स्टेज डिग्लूटिनेशन होगा, पुश बोलस डाउन द इसोफेगस. इसोफेगस में रिलैक्स ऑफ द लोअर स्फिंक्टर permit entry bolus into stomach, secretion mucus lubricant esophagus from the stomach passage. ये था हमारा क्या, इसोफेगस. इसोफेगस के अंदर क्या था, 3 स्टेज थे. पहला था वॉलेंट्री, सेकंड था इनवॉलेंट्री, फिर थर्ड है वो भी हमारा कैसा, इनवॉलेंट्री है. इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टमक को. स्टमक इज कैसा ऑर्गन है हमारा, जे शेप का ऑर्गन है. जी ट्रैक डायरेक्टली इनफ्लेट और डायफ्राम इन द एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिकल लेफ्ट हाइड्रोपोकोंड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिन. द स्टमक कंसिस्ट ऑफ द कनेक्ट इसोफेगस टू द duodenum, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज ए meal can eaten much quickly and then instant can be digestion and absorption. One function stomach serve as the mixing chamber and holding reservoir. स्टमक क्या हमारा रेजिवोयर की तरह काम करता है. एट अप्रोप्रिएट इंटरवल affect the food ingestion. Stomach force a small quantity of the material portion of the small intestine. The position and size stomach vary conventionally. Diaphragm pays inferiorly, thick empty, GI tract. In the food, the stomach digestion starts continuous digestion of proteins and triglycerides begin. The semi-solid is converted to liquid and contain certain substances are absorbed. फिर देखते हैं इसकी एनाटॉमिकल फीचर्स क्या है हमारे स्टोमक के. द स्टोमक 4 पार्ट में रीजन में बटा हुआ है. पहला पार्ट में आएगा कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिस. द कार्डिया इज राउंडेड सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टोमक. द राउंडेड पोर्शन ऑफ द सुपीरियर एंड लेफ्ट इज द कार्डियस इज द फंडस. इंफीरियर टू द फंडस इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टोमक. कार्ड बॉडी, द रीजन ऑफ द stomach connected to duodenum is pylorus. It has two pyloric antrum which connect the body of the stomach and pyloric canal. इसके अंदर क्या होंगे, दो होंगे, pyloric antrum and pyloric canal which leads into duodenum. When the stomach empty, the mucus is large fold is called rugae that can seen in with the
and I did I. The pyrolus communicate with the division of small intestine by the smooth muscle sphincter called pyrolic sphincter. The concave mediator border is the lesser curvature and greater curvature. हमारे पास दो तरह की कर्वेचर है, एक लेस कर्वेचर एक ग्रेटर कर्वेचर है. अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं स्टमक के को. ये हमारा है, ये पोर्शन कौन सा हमारा, ये पार्ट हमारा फंडस. ये पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट कौन सा आएगा, कार्डिया. कार्डिया के लेफ्ट में जस्ट होगा फंडस. फंडस के नीचे क्या होगा, ये हो गया हमारी बॉडी. और ये क्या होगा, पैरोलिक. ये फिर होगा डुडेनियम. ये क्या होगा हमारा, पैरोलिक स्पिंटर. इसके अंदर क्या होगा, पैरोलिक एंट्रम एंड पैरोलिक स्पिंटर. Pyrolic antrum and pyrolic canal. Histology of stomach. The stomach wall is composed of the same basic layer rest of the GI tract with certain modifications. The surface of a mucosa layer simple columnar epithelial surface. ठीक है. The mucosa contain a lamina propria and musculus mucosa. Epithelial extend down into the lamina propria where they form the column and secretory gastric glands. Several gastric glands open into the bottom narrow canal gastric pits. Secretion from the gastric glands flow in the east gastric pit then into the lumen of the stomach. The gastric gland contain three types of exocrine glands. Secrete their production in the stomach in the mucous neck cells. पहला है हमारा नेक म्यूकस नेक सेल. इनका काम है क्या, चीफ सेल एंड प्राइटल सेल. बोथ सरफेस सेल म्यूकस, बोथ सरफेस सेल्स एंड म्यूकस सेल सीक्रेट क्या करेंगे, म्यूकस को करेंगे. प्राइटल सेल है सीक्रेट करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl. चीफ सेल सीक्रेट करेंगे किसको, पेप्सिडोजन को एंड गैस्ट्रिक लाइपेज को. This section of the mucus parietal and gastric cell. चीज करेंगे. In addition to gastric glands, induced type endocrine cell, endocrinal cells G cell, located mainly the pyrolic antrum and secrete hormone gastrin into blood which show shortly hormone stimulus or aspect of the gastric cavity. The additional layer deep in the mucosal stomach composed of the alveolar connective tissue. The musculus three layer of smooth. कितने लेयर है इसके अंदर, 3 लेयर है. 2 found in the esophagus, small and large intestine. Outer longitudinal होगा, middle circular होगा और circular and inner क्या होगा, oblique. Limited by the serosa is composed of the simple squamous epithelium and alveolar connective tissue. Portion of the serosa converting stomach part of the viscous peritoneum as well the less curvature of the stomach as the lesser curvature and visceral peritoneum extend with the extend upward liver and less comitum. ये क्या था हमारा स्टोमक. स्टोमक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, स्टोमक हमारा 3 तरह की सेल है, चीफ सेल, गैस्ट्रिक सेल एंड प्राइटल सेल. चीफ सेल करेंगे पेप्सिडोजन को, गैस्ट्रिक सेल ग्लैंड किसको सीक्रेट करेंगे, HCl को.